So I was saying the first thing is contact information. Keep it professional. Make sure your email is something simple and appropriate. No nicknames or random numbers. And add links to LinkedIn or GitHub if you have projects or code samples. If I talk about an example, instead of using cool dude 789 or something like that at the rate gmail.com, try something like first name dot last name at the rate gmail.com. This should be your Gmail. Then the professional summary. This is your hook, which is a brief summary of what you bring to the table. Let's say you are a data science enthusiast who has worked on several machine learning projects. So what you could do, you could write something like a data scientist with 2 to 3 years of experience in predictive modeling and data analysis, is skilled in Python, R, SQL, and building machine learning models for retail analytics. And if I talk about do's and don'ts, tailor your resume for each role rather than applying for 100 roles or 50 roles each day. Or basically, you can do one thing: you can apply 5 to 10 roles, and every role should have a specific resume. For example, if you are applying for a open position in code space, let's say it is data science open position, and you are applying for it, so look for the requirements what the company is asking from the candidate, and the specific job title. So if I talk about open position in data science from Codespace, let's say right now we are having a requirement of Gen AI, having a Gen AI LLM and all of the knowledge like that. So what you should do, you should create a tailor resume for that particular role, and list out the projects that are related to that particular job. For example, let's say you have done some projects in Gen AI and LLM, then list out those projects and also skills related to that topic. If you are doing this, then the chances of getting your resume selected will be much more than before. And the next is achievements over responsibilities. So here is a tip that makes your resume stand out. Emphasize results. Instead of saying responsible for creating data pipelines, try framing it in terms of the impact you had in that particular project or the role had at the time. And you could say something like that: built and optimized data pipelines, reducing data process time by 40%. If I talk about an example, let me show you just 2 to 3 CVs that I have right now. Okay, so this is a CV right now I have, and you could see that he worked as a senior associate in some company, Tesco, in Bengaluru, and you could say that this the bold thing here. He say the saving, the negotiated. He negotiated around 140k euro and saved it. Then he also said that he achieved 100k euro cost reduction, then accurate cost tracking. So mentioning these type of things are more important because it you are telling me that what you have actually achieved in that position rather than what were your responsibilities. So saying something like built and optimized data pipelines, reducing data processing time by 40%. Here you are talking about the percentage, what result, what impact you had at that particular time. If I talk about project, or if I talk about any particular role, and the same thing you can see here on the second role he have in Sobha Limited, also senior engineer. You could say that he told more of a numbers like 150 150 crore and 174 crore and all that, or like, so rather than saying some
what were your responsibilities at the time. Try to say what you have achieved by doing a project, or by uh, hello guys, sorry, actually I had some internet issues. So let's just can you guys just tell me where was I at the time, when I have stopped the meeting and all, so I can just continue from there. Yeah, resume. All right, thank you. So yeah, I was talking about resume. I hope. Let me just repeat some of the steps. So I was telling about focus on quantifiable achievements, and uh, a tip from me is that focus on telling what actually you have done, or what were your impact in that particular project or the role you are having. For example, don't write something like responsible for creating data pipelines, or responsible for creating some predictive models or something like that. Rather than show the recruiter that you have actually changed something, you are currently what you have done previously, or what are you doing right now, you have some impact in that particular project or role. So you can say something like that: built and optimized data pipelines, reducing data processing time by 40%, or improved model accuracy by 50%, 20%, 30% with the use of hypermeter tuning. Or you have changed some algorithms, like you have shifted from machine learning to deep learning or something like that. All right, let me show you uh, some of resume that I have right now. And I was telling all of you that this is the resume of Anupam, which was basically uh, a senior associate at Tesco. So what right now I was going to show you is that see, this is the number that he is sharing. That what exactly has he have done in that particular role. You know, क्या चेंज लाया उधर इन्होंने. Although recruiters try to let's say I as a recruiter want to hire you, but I want to know कि आपने previous role में या कोई project में क्या क्या किया है which is different from others, क्या achieve किया है. And for that you need to write something that जो recruiters को लगे कि हाँ this is different from other candidates. Your resume should stand out. And for that you could write something. If I talk about machine learning or AI, you can write something like you have achieved great results for about 50 to 20% accuracy, increase in accuracy. Or you have like let's say you have created your own data, something somewhere from other platform rather than downloading from a Kaggle or some other platforms. So try to focus on these things. Let's say this is he write that he achieved
100k euro cost reduction by resolving payment disputes and closing final accounts on an overspent project. So this shows us that he actually received some great results. His achievement stand out rather than the resume itself. All right, then let me share you one more resume. This is Ayush, and see that in each internship experience he have this particular link, and when you click on this link, you can just get the certificate of that particular company or some of the work that he have done, etc. So what I want to tell you right now is that, for example, let's say you have created a project on LLM. Shit. All right, just give me a minute. I should wait a minute. Let me. Yeah. So is it visible right now? And I have opened the mic option. So if you got some issues, you can just open the mic. All right. So this was the first resume. I think it is visible right now, guys. Yeah. All right. So this was the first resume. I was just want to show you that this is the numbers. Then this is the number. It shows what actually you have achieved in that role rather than your responsibilities. All right. And this is the second resume, and I want to show you that in each internship he have completed or the projects he this is the link that he have written here. And as a recruiter, let's say I got your resume. All right. And there I have seen that you have completed 3 to 4 projects. All right. And when I saw that, तो मुझे ऐसा लगता है कि you have completed the project, but what is the difference between the जैसे कुछ common projects which are right now बहुत लोग बना चुके हैं. For example, if I talk about car sales, some housing sales and all of the projects. पर वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, गिटअप पे डाला और अपनी इंटर्नशिप पे मेंशन कर दिया, दैट्स ऑल. बट व्हाट यू कैन डू, आप यूज़ करो फ्लास्क और जेंगो या वेब 3 एपीआई और बाकी जो भी पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं. What you can do, you can create an app using that machine learning model and show recruiters that you actually also have web knowledge and also know how to integrate model into the web. So by doing that, oh, we have one more message. All right, you guys are listening. Then what I want to I was sharing the deal with that, जैसे आपने कोई मॉडल बनाया. ऑल राइट. सो आप यूज़ करें कोई फ्लास्क जैंगो का एंड क्रिएट ऐप, वेब ऐप. उससे क्या होता है, रिक्रूटर को लगता है कि हाँ यू नो वेब डेवलपमेंट, ऑल्सो मॉडल इंटीग्रेशन, ऑल्सो मॉडल डेवलपमेंट. Even though I know most of the guys know web development and also are into machine learning and deep learning and all that, but हाउ डज द रिक्रूटर नो. अगर आपने सिर्फ स्किल्स में ऐसा लिख दिया कि हाँ आई नो एच टी एम एल, आई नो सी एस एस, आई नो एम एल डी एल, डाटा साइंस एंड ऑल दैट, बट तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, यू आर फ्रेशर. मुझे कैसे पता चलेगा यू नो वेब डेवलपमेंट, यू नो मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट. सो ट्राई टू होस्ट द वेबसाइट ऑल्सो. जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो वो वेबसाइट खुलनी चाहिए जो तुमने बनाई है, वो मॉडल खुलना चाहिए जो तुमने बनाई है. सो आई कैन बेसिकली सी दैट यू आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स. उन्होंने जो मुझे सीवी शेयर किए उसमें उन्होंने ये लिख तो दिया कि उन्होंने ये सब किया है, बट मैं बिलीव कैसे करूँ कि हाँ उन्होंने किया है ऐसा. एंड फॉर दैट, और उसके लिए आप थोड़ा सा एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यू शुड
नो हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स. अगर आप फ्लास्क से मॉडल बना रहे हैं तो यू शुड नो दैट कैसे वो बनता है एंड हाउ डज दैट वर्क. ऑलराइट. और अगर आपको फ्लास्क या जेंगो में भी इशू आ रही है तो यू कैन बेसिकली यूज स्ट्रीमलिट, द सिंपलेस्ट थिंग. एक पाइथन की लाइब्रेरी है एंड यू कैन यूज स्ट्रीमलिट, और उससे आप लोग एक वेब वेब ऐप बना सकते हैं जो आपके मॉडल को वेब एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर देगा और एक फ्रंट एंड दे देगा उसको. तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि हाँ, यू एक्चुअली हैव रियली वर्कड ऑन समथिंग और आपने कुछ अचीव किया है. और ट्राई टू होस्ट इट. आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं विच आर फ्री. फॉर एग्जांपल देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज़ AWS. वहाँ पे कुछ लिमिट तक चार्जेस नहीं लगते, तो मोस्टली रिक्रूटर्स ही तुम्हारी वेबसाइट को विजिट करेंगे. और अगर स्पेसिफिकली पाइथन की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म है पाइथन एनीवेयर. पाइथन एनीवेयर में आप कोई भी पाइथन का चाहे आपके पास फ्रंट, जैसे गिटहब की बात करें, गिटहब आईओ में तो सिर्फ फ्रंट एंड होस्ट होता है, बट पाइथन एनीवेयर में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो यू कैन होस्ट इट देयर. तो अगर होस्टिंग कर सके तो बेस्ट चॉइस है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाएं और उसको होस्ट करें. होस्ट करने के बाद यहाँ पे उसको दे दें कि अगर कोई भी रिक्रूटर चाहे तो यहाँ पे लिंक पे जब क्लिक करे, इस लिंक पे, तो वो वेबसाइट खुले. ऑलराइट. So this is the basic thing that I want to share you, that most of the आप मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं. यहाँ पे आप रेज्यूमे देखिए तो लोगों में इशू क्या है कि वो रेज्यूमे का नाम तक सही से नहीं रखते हैं. ये देखिए, रेज्यूमे 1, रेज्यूमे PM, फर्स्ट रेज्यूमे. ऐसे नाम रखने से कोई मतलब नहीं है. अगर आपको लगता है कि रिक्रूटर्स नोटिस नहीं करते तो आप गलत हैं. रिक्रूटर्स नोटिस करते हैं कि आपने रिज्यूमे का नाम भी क्या रखा है. ये देखिए, इन्होंने नाम रखा है आई यूज रिज्यूमे फाइनल. वट योर नेम शुड बी योर फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, देन हाइफन, देन रिज्यूमे और CV. ऑलराइट गाइस, so let's move on to the next thing. Yeah, showcasing your projects effectively. So projects are your secret weapon, if especially for technical roles where hands-on experience is key. So if here is a simple structure to follow when describing each project. The problem, uh, the solution, and the technologies you have used in that particular project, and the outcome you have achieved. The problem is, what issue were you addressing? For example, you are predicting car prices to assist in setting fair resale values. And the solution, how did you tackle it? Your problem was predicting cars prices to assist in setting fair resale value. And the solution, how did you tackle it? Maybe you can say you have used regression models or experimented with multiple algorithms. Then technologies you have used, mention the languages and libraries you have used. For example, like you have used Python or R, or libraries like Python, Pandas, TensorFlow, PyTorch, and all. And finally, the outcome. So showcase your impact, such as you have achieved an accuracy rate of 90% in predictions, and you have reduced error margin by 50%. That was the thing I was telling you earlier, that when you write something on your resume about the project and all, uh, this that was I telling you that the problem, then the solution, then the technologies you have used, then the outcome you have achieved. If you are writing that what type of project you have completed, and you have just written that I have completed a project, I have used regression, and I have achieved 90% accuracy. What you should follow this. You should write the problem itself first, then the solution, then the technologies you have used, then the outcome itself of the project. And make sure
to mention your GitHub profile, LinkedIn profile, email in the resume. And if it is great if you have a portfolio, because right now portfolio is really important. And if you are worrying about writing the code itself and hosting it on GitHub IO, then you can use Behance as well. Behance is a platform where you can just create your portfolio. And if you are not good at that, then you can basically write the code itself and host it on GitHub IO. It is a free platform where you can host your portfolio. And let's say this is your resume, then basically you should have a portfolio button here, where when I should click that particular button, your portfolio should open. So I can see that yes, you have created something for yourself also. And he mentioned his LinkedIn email. That is good, but if you are from a technical background, you should mention your GitHub also. All right, guys. So next is interview preparation essentials. So with your resume ready, let's move on to preparing for the interview itself. A few elements can really set you up for success here. First is research. So research is non-negotiable. Take some time to understand the company, its mission, and its recent projects. For instance, if you are applying to a healthcare focused AI company, look up any AI projects they have done in diagnostics or drug discovery. And this shows genuine interest and sets you apart from others who might come in unprepared. Then practice with mock interviews. Practice coding problems. If the role is technical, platforms like LeetCode, HackerRank, or Ramp can be great for this. And you could also set up a mock interview with your friend or your mentor to simulate the experience. And the mindset. Remember, you are also evaluating them to see if they are a fit for you. So, having this mindset can help you stay calm and confident, knowing that it's a two-way process. The next is top technical skills to highlight. So, let's talk about the technical skills. Technical skills employers are looking for majorly. So, this can be very slightly based on whether you are aiming for data science, machine learning, or AI role. So if you are in data science role, SQL is a must. Most data science roles involve databases, so SQL is essential. You should also be comfortable with data analysis and visualization tools like Pandas, Matplotlib, or Seaborn. And if I talk about machine learning and AI roles, the focused one is Python and R, and specific ML libraries like scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. And employers want to see that you can build and fine tune models, so be ready to showcase this. That's why I told you that if you are into machine learning and that AI roles, you should have your project and what you have achieved mentioned in your resume. And also if you are you should make a website for that particular project as well. And show off your new skills. If you are working with cutting edge tools like Hugging Face for NLP, or using MLOps platforms like MLflow, so mention those. And for example, built an NLP model for sentiment analysis using Hugging Face, and you achieved 80% accuracy. You can write this particular thing. Let me repeat it. Built an NLP model for sentiment analysis using Hugging Face, achieving 88% accuracy. Now, this shows you are keeping up with the latest trends. Right now, LLM is basically the most popular right now, and Gen AI. So you should know both. Both of these, have some idea about them. What is exactly is Hugging Face, LLM, and generative AI. And the next is common interview questions and how to answer them. So let's go through some questions you might encounter, and I'll break them down into few categories.
First is behavioral, then technical and problem solving questions. If I talk about behavioral questions, these usually ask about your experiences, teamwork, or challenges you have faced. For example, tell me about a time you encountered a data quality issue. Then for answering this question, you should use STAR method: situation, task, action, and result. Situation, in a previous, you can say, like, in a previous role I was tasked with cleaning up a client data set which had missing values and duplicate entries. Then task, my goal was to ensure data quality for analysis. Action, what action you have to? I implemented data cleaning techniques such as removing duplicates and filling missing values using the median. And the result, this improved the dataset's usability and led to a more accurate final analysis. So this is the STAR method. The first one you should say that the situation, then the task, then the action, then the result. And the next is technical questions. So these are more role specific. For example, let's say the recruiter asks you, how would you select an algorithm for a classification problem? So here, explain your thought process. You might start with simple algorithms like logistic regression or decision trees. Then talk about how you test and compare performance. So this shows you are methodical and understand different options. And the next is technical Q&A strategies. So sometimes you won't know an answer, and that's completely fine. If let's say I as a recruiter asked you a question, and you don't have any idea about that, so how would you answer that question? So the key is in how you handle it. So first thing is approach with curiosity. Let's say if you are not sure, say something like, that's an interesting problem. You would start by saying, that's an interesting problem, and you say, I approach it by, then walk the process, which right now you are thinking, and walk them through your thought process. For example, if they ask how you handled a certain data problem you are unfamiliar with, you could ask, uh, you could discuss similar methods you have used, showing adaptability. For example, if uh, if someone asks you what is future scaling, and you start thinking about, you have forgotten some of the things, let's say standardization or normalization. So you should start with explaining standardization and some of the formulas you have remembered, rather than focusing on future scaling itself. And the second other thing is owning up to mistakes. If you make an error, recognize it and mention how you adjust that. Let's say you realize midway that a different approach would have been better, and then you should acknowledge it and pivot. And most of the interviewers appreciate honesty and quick thinking. And if I ask you a question about explaining something, and in the midway you've forgotten some of the most common things, and you should you should think that you should start over from the start, and that you were wrong. You have explained something different from the topic we were before. All right. And this is the most important thing. If let's say if you are having an interview and the interview is finished, then most of the recruiters ask you that if you have any questions you want to ask. So for that particular thing, remember, interviews are a conversation, not a one way interrogation. And this is also your chance to learn about the company and and make a positive impression. Yeah, if talk about an example, then some good questions to ask is about the role. You can ask, what does success look like for this position in the first 6 months?
Then the team dynamics, you can ask, can you tell me more about the team I'd be working with? And are there opportunities for us upskilling or attending conferences in AI or ML? So these questions, if you ask these questions, the recruiter can guess something like, yeah, you are different from the others, and you are interested in the company, you are interested in the role itself, and each of these questions shows that you are interested and thinking ahead. All right, so let me just share you some common questions that I have faced uh, at the time when I was learning data science and having conversation on most of the interviews I have given are from data science or AI and ML. And I'll be just reading it out. So you should may probably take a pen and paper, write it out if you think you are interested in these topics. So first thing comes is feature scaling. Most of you, if you are from the backgrounds of AI and ML, you should know that what exactly is feature scaling. But if I asked you what is the formula of feature scaling, then you probably don't know. So, these things are basically most of the common questions the recruiter asks. So, feature scaling is basically is in two types. The first thing is normalization, and the second is standardization. And what the differences is in normalization, values will be between from 0 to 1 or -1 to 1. And the formula is x minus x minimum upon x maximum minus x minimum. It means if I pick a row, sorry, if I pick a column and apply uh, normalization, then the current row, the number of current row, it means x minus x minimum, the minimum of that particular column upon the maximum of the particular column minus the minimum of the particular column. So this will be the result of that particular element. And if you want to use this method of to scale your future, you should use min max scaler. Min max scaler is a library from Python. And you might be probably wondering, why would I use feature scaling? So if I talk about an example, let's say that you have a data set, and the data set differs from the let's say it's a data set of housing sale prices, and there is the price of the house, the rent of the house, the age of the house. So age and the amount are different. तो अगर बात करें एज में, स्टार्ट होगा 20 साल, 10 साल मोस्ट, अगर मैक्स की बात करें तो 100 साल, 150 साल. बट अगर हम बात करें उसके प्राइस की, तो वो डिफर करेगा. उसका मैक्सिमम लेंथ 10 जीरो भी हो सकता है, 5 जीरो भी हो सकता है, 20 जीरो भी हो सकते हैं. तो ये जो नंबर्स के बीच में डिफरेंट ये गैप्स है, इसको कवर करने के लिए, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली मॉडल में फिट कर देंगे तो फिर जो प्राइस है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल यूज़ फीचर स्केलिंग. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग यूज़ करते हैं, ताकि जो एज है और जो हमारा प्राइस है, दोनों एक एक उसमें आ जाए, दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे नंबर के. इसीलिए मैंने बताया कि वैल्यूज़ जो होंगी वो या तो 0 से 1 के बीच में होंगी नॉर्मलाइजेशन में, या तो -1 से 1 के बीच में होंगी. और फार्मूला यूज करेंगे हम लोग x माइनस एक्स मिनिमम अपॉन x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम. और उसका यूज कैसे करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मिन मैक्स स्केलर का, अगर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना हो तो. अब सेकंड थिंग आता है स्टैंडर्डाइजेशन. मैंने बताया कि फ्यूचर स्केलिंग में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे या तो स्टैंडर्डाइजेशन यूज करेंगे. और नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन से डिफरेंट है. इसीलिए मैंने पहले कहा कि इन नॉर्मलाइजेशन द वैल्यूज विल बी बिटवीन फ्रॉम 0 to 1 और -1 to 1. बट इन स्टैंडर्डाइजेशन इट विल चेंज. इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है. अब स्टैंडर्डाइजेशन में ऐसा नहीं कि 0 से 100 तक रहेगा, 0 से 2 तक रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक रेंज नहीं है, कहीं से कहीं भी हो सकता है. एंड द फार्मूला इज ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज x
minus mean of x upon standard deviation of x. X minus mean of x upon standard deviation of x. और इसकी मीन डिफॉल्ट में 0 होती है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिफॉल्ट में 1 होता है. Or if you want to implement this method, you need to import a library called standard scaler. All right. I hope guys you are getting what actually I was saying. एंड वन मोर थिंग, अगर आप डीप लर्निंग में हैं तो यू शुड नो दैट देयर इज वन थिंग कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन. हाउएवर मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो डीप लर्निंग में यूज़ होता है. अब डीप एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन, कुछ एक्टिवेशन फंक्शन जैसे रेलू और सिग्मॉइड या सॉफ्ट मैक्स, ये नाम है एक्टिवेशन फंक्शन के. सो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन introduces non-linearity into a model. If I talk about an example, sigmoid is used in the output layer in CNN or in ANN to make binary predictions. और ये क्या करता है? नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस कर देता है फंक्शन मॉडल में. And one more thing, most of the time recruiters ask about the evaluation of classification model. अगर आपके पास कोई classification model है, then how would you evaluate that particular model? So for that we have options: accuracy, recall, precision, F1 score, specificity, AUC, ROC. AUC is area under the curve. So these are the 7 things. If you want to evaluate your model, specifically classification model, if you want to evaluate your model, you should use these 7 things to evaluate them, which is accuracy, recall, precision, FN score, specificity, AUC and ROC. And guys, if you are handling missing values, so there are some rules to handle missing values. Either you can replace them or you can just remove the entire column. And let's say if you are having a data from of car sales, and some rows have more than 50 or 60% of data which are missing. So in that case you should remove it. And if you have 10 to 30 40% of data that are missing, you can fill out those values with mean or median. So basically there are 3 options for you. First is replace them with mean or median, second is for median, then third is remove them. So if there is outliers in the data, if there are outliers in the data, we will replace the missing values with median. मतलब अगर हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं, और आउटलायर्स बेसिकली चेक करने के लिए यू कैन यूज SNS डॉट बॉक्स प्लॉट. SNS इज सीबॉन एक लाइब्रेरी है फॉर डाटा विजुअलाइजेशन, एंड यू कैन यूज सीबॉन का बॉक्स प्लॉट. यू कैन यूज SNS डॉट बॉक्स प्लॉट टू गेट द चेक द आउटलायर्स. और अगर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं डाटा में, देन you should replace them with the median. On the other hand, if there are no outliers, then replace them with the mean. So what we can guess from this situation is that अगर आपके पास missing values हैं और उसमें outliers भी हैं, then you can replace them with the median. और अगर outliers नहीं हैं, then you can replace with the mean. Alright.
अब one more thing is fine. Most of the time you heard something called fine parameter tuning or fine tuning, parameter tuning, something like that. और इसको एक और चीज़ बोलते हैं which is cross validation. क्रॉस वैलिडेशन दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रिड सर्च सीवी एंड द सेकंड इज रैंडम सर्च सीवी. ये बोथ जो हैं दे आर लाइब्रेरीज विच एग्जिस्ट इन पाइथन. तो होता क्या है, जैसे अगर आपको कोई भी मॉडल को फाइन ट्यून करना है देन यू कैन यूज़ ग्रिड सर्च सीवी और रैंडम सर्च सीवी. लेकिन अगर आपके एल्गोरिथम में हाइपर पैरामीटर जो हैं उनका स्पेस जो स्मॉल है, फॉर एग्जांपल अगर हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू बूस्टिंग, कंपेयर टू सम एल्गोरिथम्स ऑफ लेट्स से एक्जी बूस्ट या एडा बूस्ट. तो अगर उनके कंपैरिजन में बात करें तो हम लोग ग्रिड सर्च सीवी यूज़ करेंगे लीनियर रिग्रेशन के टाइम पे और रैंडम सर्च सीवी यूज़ करेंगे बूस्टिंग में, क्योंकि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड after that I'll talk about deep learning and we'll take 5 minute breaks, then we'll continue. All right, yes. So let's just continue where we left off. So I want to share you one thing from to all of you is that you should probably wondering that why do we use activation function? Uh, why do we need to introduce non-linearity into the model? As I told you earlier that we are using activation function to introduce non-linearity in neural networks. But why? So let's say that if there is linearity, then there is no use of hidden layer. If you know deep learning that we need to use hidden layer in ANN or CNN or RNN, all other algorithms that are inspired from ANN. So if there is no linearity,
then there is no use of hidden layer. So in order to have deep nets and find complex relationships through arbitrary functions, we need to introduce non-linearity in the model. And for that, we have to use functions from ReLU, sigmoid, softmax, and all that functions. And one more thing is, which is very most important, is you might be probably wondering what is difference from CNN and RNN. Most of the people think that CNN is for image classification or dealing with image pixels and all that, and RNN for specifically dealing with voice related things. Let's say for voice recognition or voice generation and all that. Yeah, so most of the time people think that CNN is specifically CNN for dealing with images. But why do you think that? Why CNN is only for image dealing with images or generating images and all that? So for that there is something called RNN remembers the context. If I talk about RNN, then RNN remembers the context what I have done last time. But CNN, or you can say convolution based architecture, does not remember. So with respect to future, and if I talk about फॉर एग्जांपल अगर आरएनएन की बात करें हम, और आरएनएन ने आपने कोई मॉडल ट्रेन किया हो आरएनएन में, तो आरएनएन जानता है कि मैंने पिछले इपोक्स में क्या किया, ऑलराइट, और वो जानता है कि मैंने उससे पिछले इपोक्स में क्या किया. बट इफ आई टॉक अबाउट सीएनएन, देन सीएनएन डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग. सीएनएन और कन्वोल्यूशन बेस्ड आर्किटेक्चर्स कोई भी हुआ, वो भी जो भी कन्वोल्यूशन बेस्ड आर्किटेक्चर्स होते हैं. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज, अगर हम वॉइस की बात करें, इसीलिए हम लोग आर एन एन मोस्टली वॉइस से रिलेटेड थिंग्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि आर एन एन वॉइस की अगर हम बात करें तो आर एन एन को पता होना चाहिए कि मैंने पहले क्या बोला, किस वॉइस में बोला, किस तरीके से बोला. इसलिए मोस्टली हम लोग आर एन एन यूज़ करते हैं उसके लिए. और सी एन एन में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि हमें पिछले याद करना ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वी आर डीलिंग विथ इमेजेस. ऑलराइट, और यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे. अगर सी एन एन की मैं बात करूँ तो with respect to feature extraction, CNN is more powerful than RNN. अब you might be probably wondering what is feature extraction. Feature extraction, अगर हम image को input में डाल रहे हैं तो वो feature extract करेगा ना input से, तभी तो CNN डील करेगा उससे. So अगर हम feature extraction की बात करें तो CNN is far more powerful than RNN itself. Alright. Then we'll start about, I'll just show you something like where does deep learning come from. Alright, just give me a minute. Alright, so क्या हुआ कि जब मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई तो डीप लर्निंग भी स्टार्ट होनी थी. तो मोस्टली साइंटिस्ट को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करें. मतलब जो ह्यूमन जैसे सोचता है, जैसे करता है, जैसे पुरानी चीज़ों को याद करता है या उनसे सीख के कुछ ट्राई करता है, क्यों ना भी ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करें हम लोग और उसकी एल्गोरिथम बन जाए. सो फॉर दैट हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरॉन की. न्यूरॉन क्या होता है, हम लोग ह्यूमन सेल्स में बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, उनसे इंस्पायर होके आर्टिफिशियल न्यूरॉन बने. पर हम लोग पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बारे में. बायोलॉजिकल न्यूरॉन में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मैं बात करूंगा. फर्स्ट वन इज डेंड्रॉइड. तो डेंड्रॉइड क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सम सेंसरी ऑर्गन्स. अगर एग्जांपल की बात करें, लेट्स से कि आप बैठे हैं एंड योर मदर केम और आपको एक पतीली पकड़ा दी. क्या हुआ, अगर पतीली बहुत ठंडी होगी तो आप हाथ से छोड़ देंगे, बहुत ठंडी होगी तो कंट्रोल करेंगे और या तो जल्दी से रख देंगे या नहीं रखेंगे. अगर आपके हाथ में एकदम से मैं गर्म सरिया दे दूं तो आप क्या करेंगे, उसको फट से छोड़ देंगे बिना कुछ सोचे.
बिना कुछ सोचे, जैसे कि आपके हाथ के कांटेक्ट में वो गर्म चीज़ आएगी, आप सट से उसको छोड़ देंगे। बट वाई डू यू थिंक दैट, हाउ डज योर ब्रेन प्रोसेस दैट फास्ट? अगर आप कोई और चीज़ की बात करें तो यू शुड टेक एटलीस्ट अराउंड 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। बट इसके लिए हम लोग क्या यूज़ होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं जो आपके ब्रेन्स और आपके मसल्स से साथ कनेक्शंस में जुड़े होते हैं। तो जैसे ही आपको हाथ में हीट, पेन कुछ भी फील होता है, देन यू इमीडिएट रिएक्शन निकलता है विदाउट एनी डिले। एंड वो क्यों, कैसे निकलता है, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन की हेल्प से निकलता है। तो इसमें होते हैं डेंड्राइट क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी ऑर्गन्स। मतलब अगर आपके हाथ में कुछ गर्म महसूस हुआ तो इट बेसिकली कंटेक्ट, न्यूरॉन क्या करेगा, वो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन से कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन को इनपुट की तरह से लेगा। देन देयर कम्स सिनाप्स, so it governs the strengths of the interaction between two neurons. Basically it governs the strengths of the interaction between two neurons, like weights associated with inputs। मतलब अभी तक जो inputs आ रहे थे उसमें कुछ weight associated है। मतलब कि जैसे आपके दो हाथ हैं, दोनों में अगर हम दोनों हाथ में एक ही समय पे कुछ गर्म चीज़ को पकड़ा दें, तो आपके ब्रेन कैसे प्रोसेस करेगा कि पहले किसको छोड़ना है। उसीलिए उसमें वेट्स एसोसिएट हुए कि जो ज़्यादा गर्म होगा उसको पहले छोड़ेंगे हम। सो ये इंपॉर्टेंस है वेट का। ऑलराइट, अब क्या हुआ कि डेंड्रॉइड्स थे पहले जो इनपुट ले रहे थे, फिर सिनाप्स आया जो गवर्न कर रहा है कि किसको पहले, किसके ज़्यादा वेट है, किसका कम वेट है। देन सोमा टेक्स ऑल द इनपुट्स एंड डज सम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इट सेंड्स द आउटपुट टू अदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन। अब सोमा का क्या काम है कि जब इनपुट आया उसका कि कुछ हाथ में उसने गरम टच किया है, तो वो क्या करेगा, तुरंत एक्शन कौन लेगा, वो सोमा लेगा। सोमा कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, मान लो उसने डिसीजन लिया कि बहुत गर्म है, छोड़ दो हाथ से, और सोमा ने जब एक्शन परफॉर्म किया तो उसने हाथ से छोड़ दिया। सो दिस इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल न्यूरॉन। एंड इफ आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल न्यूरॉन, तो उसमें क्या होगा, लेट मी just share the whiteboard. Just give me a minute, guys. सो अब हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन की बात करें। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन में पहले लेट्स से कि कोई इनपुट आया विच इज़ x1, फिर कोई इनपुट आया विच इज़ x2, एंड देन अगेन कुछ इनपुट आया विच इज़ x3। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो प्रोसेसिंग करेगा। इस फंक्शंस के पास हम अपना डाटा भेजेंगे और ये कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा हमको। आउटपुट y हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया, और ये x1 x2 x3। अब क्या होगा, इसमें कुछ वेट एसोसिएटेड होंगे गाइस।
So I was talk about that. Let's say this is x1, this is x2, this is x3, and these are the inputs, and I'll feed them into x. F is a function. Then there will be an output which is called y. Y. All right. And in all the output in all the input there will be some weights associated in it. W1, W2, W3. All right. अब होगा क्या कि जब इन x1 x2 x3 में हम लोग कुछ वेट एसोसिएट कर देंगे, फंक्शन के पास जब ये पहुंचेगा, फंक्शन कुछ अपना कुछ जो भी होगा वो सोचेगा, देन वो आउटपुट देगा हमको। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना था। पर फिर इसके बाद पहला मॉडल बना द एम पी मॉडल। एम पी मॉडल विच वॉज द फर्स्ट मॉडल विच इज बेसिकली come from the human brain, which is stimulated from the human brain। उसमें ये सब वेट वगैरह नहीं थे। उसमें सिर्फ इनपुट था, एंड वी वर हैविंग एफ। ऑलराइट। उसके बाद सेकंड मॉडल जो बना तो उसमें हम लोग के पास वेट्स भी थे, बट पहले मॉडल में विच वॉज एमपी न्यूरल मॉडल उसमें वेट्स एसोसिएटेड नहीं थे। ऑलराइट। और पहले मॉडल में हम लोग इनपुट जो ले रहे थे वो भी बाइनरी में ले रहे थे, और आउटपुट जो दे रहे थे वो भी बाइनरी में दे रहे थे। तो अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आएगा आइदर 0 और 1, और इनपुट जो होगा वो बूलियन डेटा होगा पहले मॉडल में। उसके बाद सेकंड मॉडल आया, जो सेकंड मॉडल था उसमें हम लोग इनपुट रियल डाटा ले रहे थे, बूलियन डाटा नहीं ले रहे थे इनपुट। और उसके बाद उसमें आउटपुट जो आ रहा था वो बाइनरी था। ऑलराइट। सो यहाँ से एआई की स्टार्टिंग हुई। गाइस अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जनरेटिव मॉडल्स की, और फिर विल एंड दिस सेशन। जनरेटिव मॉडल्स काफ़ी फेमस इस टाइम। इट बेसिकली composed of two neural networks, which is a generator that generates data that looks similar to the training data, and there will be a discriminator that tries to tell real data from the fake data। So if I talk about an example, आप लोगों ने फर्जी देखा होगा, विच इज़ अ सीरीज फ्रॉम अमेजन। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक फेक नोट जनरेट करते हैं। फेक नोट को पकड़ने वाला होता है फेक नोट बनाने वाला होता है जनरेटर, फेक नोट को पकड़ने वाला होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या होता है, एक क्रिमिनल होता है, ट्राइड विच वॉज ट्राइंग टू मेक फेक मनी, एंड देन द डिस्क्रिमिनेटर विच इज अ पुलिस, इट ट्राई टू टेल रियल मनी फ्रॉम द फेक मनी। दिस इज बेसिकली द जनरेटिव मॉडल। तो हम लोग का जनरेटिव मॉडल में जनरेटर एक इमेज बनाएगा या पिक्सल बनाएगा, और डिस्क्रिमिनेटर बताएगा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। These two layers basically both of them composed of two neural networks, that is basically generative models। A generator that generates data
that looks similar to the training data, and a discriminator that tries to tell real data from the fake data. And lastly, मैं बस I want to share one something most more important thing is ML end to end. मतलब अगर आप कोई मशीन लर्निंग या AI का मॉडल बना रहे हैं तो हाउ शुड इट स्टार्ट एंड हाउ शुड इट एंड. लाइक कभी कभी इंटरव्यू में दे आस्क यू दैट व्हाट इज द एंड टू एंड प्रोसीजर टू क्रिएट एन ML मॉडल. So we'll start first by we start by gathering some requirements, which is requirement gathering. Then how the second step would be how can we gather the data. All right. Then the third step would be feature engineering, and in feature engineering there comes handling missing values. Uh, wait. We'll just 5 more minutes, and we'll answer all the questions that you was having right now. So we'll first start by requirement gathering. Then the second would be how can we gather the data. Then the second would be feature engineering. And in that part of feature engineering, the first thing would be handling missing values, then handling categorical values, then scaling of the data. It means either normalization or standardization. Then handling the outliers. Then after that, feature selection, then training the model, then validation, then hypertuning. And if there are outliers in the data set, we will replace null values with median, and if there are no outliers, we can replace them with mean. So this is the end to end structure if you are developing a machine learning model from the very start. And some of the interviewers basically ask you this, that if you want to build a model from the very scratch, what would be the initial steps that you would follow to create a fully fledged machine learning model. So we'll basically follow this to create a MLN encryption model. So guys, thank you for joining. I hope you have gained insights to make your interview process smoother, and feel free to reach out with any follow-up questions. And best of luck with your preparation, and remember, keep practicing and don't get discouraged. Every interview is a chance to learn. Try to learn from the interview, even if they don't select you and all that. Alright, guys. So, answering to your questions, Pradeep Paul, what can be the best type of projects to showcase on one's resume? See, uh, try to, if you have completed a resume, then try to know everything about that particular project. Let's say if you completed a project called sales protection. All right. Even though it doesn't depend on the कुछ बहुत भारी भरकम प्रोजेक्ट नहीं लिखना है. यू शुड नो अबाउट द प्रोजेक्ट. मतलब अगर आपसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पूछ रहे रिक्रूटर, देन यू शुड नो. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कार सेल्स का एक मॉडल बनाया है, तो आपने डेटा कहाँ से लिया. आप सोच रहे हैं कि अरे हमें डेटा तो वहाँ से मिल गया था, बट यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू शुड आंसर. मतलब कि आपने डेटा यहाँ से लिया, आपने ऐसे मिसिंग वैल्यूज हैंडल करी, ऐसे ये किया, ऐसे वो किया. यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट. और डिपेंड करता है कि आपका कैरियर, जैसे मान लीजिए आप एआई में ही हैं, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जैसे एलएलएम पे, जनरेटिव एआई पे, क्योंकि राइट नाउ दे आर द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आर एलएलएम. अभी एनवीडिया ने एक मॉडल बनाया है विच इज़ बेसिकली चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छा है. पब्लिकली रिलीज भी किया उन्होंने हगिंग फेस पे. ट्राइट इट आउट, रीड समथिंग अबाउट दैट. और कुछ फेलो एआई फेलोज निकलते हैं, उन पे अप्लाई करके देखिए. और ओपन पोजीशंस होती हैं. ओमडेना ट्राई करिए. ओमडेना पे तो आपको कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. यू कैन बेसिकली गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद प्रोफेशनल्स. वहाँ पे आप रोड मिलेंगे आप लोग को. काफ़ी लोग मिलते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम इंडिया. ओमडेना, OMDENA, ओमडेना. वहाँ पे यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. और अगर आपने 4-5 प्रोजेक्ट बना लिए हैं अच्छे से, देन यू कैन ऑल्सो गेट
You can be an instructor at that academy, and many more things. You should explore it on dinner.com. Guys, any more questions? Oh, thank you, Sana. Thank you, Sana, for the compliment. Yes, sure. Hello. Uh, if I talk about artificial intelligence, as I said before, that right now industry में Gen AI और LLM NLP बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जैसे मैं बात करूँ चैटबॉट डेवलपमेंट की, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स राइट नाउ यू सी दैट दे हैव चैटबॉट इन देम। तो ट्राई करिए आप चैटबॉट बनाने की, कुछ LLM प्रोजेक्ट्स, और इंडस्ट्री के साथ अपडेटेड रहिए क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। तो ट्राई टू बिल्ड दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, और उनकी वेबसाइट ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम रिक्रूटर को पता चलना चाहिए कि राइट नाउ यू डू समथिंग, तुम्हें वेब डेवलपमेंट भी आता है, तुम्हें वो मॉडल इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से आता है। ऑलराइट। ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? Thank you for asking questions, Shep. How can we work on the live project? uh, Actually, there are people, I seen some of the people that want some of the volunteers, जैसे किसी को नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड दे डोंट हैव मैन पावर, दे ट्राई टू काफ़ी, आप जो है कम्युनिटी ज्वाइन करिए, एआई वाली कम्युनिटीज, तो उसमें काफ़ी लोग जो है हेल्प मांगते हैं कि यस, इफ एनीवन वांट्स टू वर्क एज अ वॉलंटियर इन माय कंपनी, or if anyone wants to work on a project, let's make a project, I need 4 people, 5 people, ऐसा करते हैं बहुत। अगर आप लोग यू शुड ज्वाइन सम कम्युनिटीज एज वेल। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, और काफ़ी नॉलेज भी मिलता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है थ्रू द कम्युनिटी इटसेल्फ। अगर आपको, जैसे गूगल का एआई स्कीम चलता है, गूगल एआई, उनका हर सिटी में मोस्टली जीडीजी और जीएसडीसी होते हैं, और गूगल का इवेंट वगैरह भी होता है, उनसे अपडेटेड रहिए, उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी आपको। ऑन डिनर भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन यू हाउ कैन यू जॉइन द, you should visit the website, you should search in the Google something like GSDC or GDG. Let me write it out. Yes, GDSC and GDG. GDG. And then after that, you should write the city name or right now where you are residing। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम रेसिडिंग इन लखनऊ, सो आई शुड राइट जीडीजी लखनऊ, और गूगल पे जब यू आप जब टाइप करेंगे, देन मे बी यू कैन ज्वाइन देयर कम्युनिटी। कोई फॉर्म भरना पड़ता है, आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म यू विल गेट अ मेल एंड सम ऑफ द लिंक्स फॉर द कम्युनिटी एंड ऑल द डिटेल्स। और कुछ न्यूज़ लेटर ज्वाइन करें फ्रॉम लिंक्डइन, काफ़ी न्यूज़ लेटर जिसमें राइट नाउ कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं एआई से, एमएल का जितने भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। आई होप हैदर आई हैव सेट व्हाट आई टोल्ड यू, यू विल गेट। गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? Related to what? So there is a guy called Joel, which is added in my LinkedIn. He actually make really good projects related to AI, Gen AI and LLM. I'll share some of the projects in the group, or just message me. I'll share them. अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देखने, जिससे वो मोस्टली ही फोकसेस ऑन योलो, योलो 11, योलो 12 और योलो 8 9। आई होप यू guys know about YOLO.
या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए मोस्टली योलो यूज होता है. व्हाट्स योर लिंक्डइन? My link. Just search Muhammad Talib on LinkedIn. Maybe I should come there at first. Uh, can you repeat what you said about Atul? Let's just wait a minute. I'll share the profile link. Just a minute. Yeah. So I just share the my profile link in the messages. Thank you, Priya, for the compliment. I hope it really helps you to tackle the interview and all. Yes, I recorded the meeting and I'll be uploading this on YouTube. I think I will upload it tomorrow, I guess. Sure, sure. Actually, the channel name is Code Space Academy. I'll just type it in the comments. Alright, Code Space Community. Yeah, we'll upload it tomorrow, and you can go just listen out to everything I shared. Alright, guys, any more questions, or should we end this meeting right now? Alright, guys, thank you for joining this session. I hope I have helped you even a little bit. Alright, guys, thank you, Adar. Thank you for the compliment.